The Snake and the Mirror by Waiko Muhammad Bashir. Let's see the story. It is the story of a doctor who has just started his medical practice. He earns a meager income and lives in a small rented room which is an outside house with a tiled roof. The beam was supported on a gable which was full of rats who kept moving in and out of the room, and there was no electricity supply. During a summer night, the doctor used to take the dinner at a restaurant, and after that he returned home. When he opened the door, he hears a noise from above, but he did not react because he was used to such noises. He lights the kerosene lamp, takes off his coat and shirt and vest, and opens the window to get some fresh air. He takes out a medical book from the drawer to read and sits in front of a large mirror. A small comb is also placed there. He opens the book and sits down. As he is sitting on the chair in the front of the mirror, he looks at his image. He thinks he's not married and he's a doctor too. He should look handsome, and he had made a decision to grow some mustache and shave daily. To keep his face attractive, he will also put out his smile. Then after he was thinking about a girl whom he has to marry. He thought he would be marrying a fat lady as his wife, so that she would not be able to run fast and catch him in case she chases him to do some mistakes. He is so engrossed in daydreaming that he does not pay attention to the sudden silence. The rats have stopped scramping, and there's a sound of something falling behind. There's a third sound. It happens so instantly that he gets no time to react. By the time he turns around to see, the snake has wriggled over the back of the chair and lands on his shoulder. It coils around his left arm so firmly that his arm starts aching. It is a dangerous cobra with its hood spreading out hardly 3 inches away from his face. He sits like a stone statue and did not move, lest the snake may bite him. He thinks of various medicines he had to take after the snake bites him. In a moment of fear, he realizes that God has punished him for being too proud and arrogant. The moment he accepts his true worth, the snake turns his head and looks into the mirror. Now the snake is attracted by its own beauty, and it was carefully looking into the mirror. That's what the doctor thinks. Slowly it crawls and creeps onto the table and moves towards the mirror so that it may enjoy its reflection closely into the mirror. As soon as the snake gets down, he quietly gets up from the chair and leaps through the yard and runs away to his friend's house. The next morning, when the doctor along with his 2 friends came to the room to bring out his belongings, the room has been cleaned. What happened? Some thief has removed some of his things the previous night and left his dirty vest, maybe to insult him. That's about the story. Let us see the Hindi translation of the whole chapter, The Snake and the Mirror. एक बार एक डॉक्टर अपनी मेडिकल प्रैक्टिस अभी ही शुरू किया था. ये स्टोरी उनके बारे में ही है. ये एक छोटे से घर में रहते थे जो आउट हाउस था और जिसका रूफ टाइल था. उस टाइल्स में जो गैबल था, जिस पे सपोर्ट था उस टाइल्स का, वो क्या था? पूरा रैट्स का घर था. घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी नहीं थी और वो सिर्फ एक लैम्प जलाकर रहता था. एक रात खाना खाने के बाद वो जब वापस घर जाता है तो बहुत नॉइज़ रहती है उनके घर में, पर वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो यूज टू है नॉइज़ेस के, क्योंकि रैट्स कंटिन्यूसली नॉइज़ करते रहते हैं. लैम्प जलाते हैं, अपनी कोट शर्ट और वेस्ट को रिमूव करके विंडो ओपन करते हैं. अब वो चाहते हैं अपनी एक लौती मेडिकल बुक निकालते हैं और बैठते उसे रीड करने. इनकी टेबल पर एक मिरर, एक कोम, तो केरोसिन लैम्प और बुक रखी होती है. वो जब बुक को ओपन करते हैं तभी खुद को मिरर में देखते हैं और सोचते हैं कि आई एम अ डॉक्टर और अब आई शुड लुक हैंडसम. तो उसके लिए ये डिसाइड करते हैं ना ही वुड शेव डेली एंड विल ग्रो अ मुस्टैच. After that also he thought that he would put on his attractive smile. Then after he thinks about his marriage
एंड ही थिंक्स दैट ही वुड मैरी अ रिच डॉक्टर जो एकदम फुल गुड प्रैक्टिस में हो। इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी लेकिन वो गुड प्रैक्टिस में हो, ऑलरेडी बहुत दिन से जॉब करती हो। उसके बाद वो ये भी सोचते हैं कि वो लेडी एक फैट लेडी होनी चाहिए ताकि अगर मैं कोई मिस्टेक करूं तो मुझे दौड़ के पकड़ ना पाए। ये सब में वो इतने बिजी रहते हैं कि जो नॉइजेस थी वो शांत हो गई थी और ये उनको समझ में नहीं आया। और अचानक से एक थड का साउंड होता है और कुछ तो पीछे गिरता है, पर अब बहुत लेट हो चुकी थी। जब तक वो वापस पलट के देखते कि नहीं पीछे क्या था, तब तक एक स्नेक जो है वो उनके शोल्डर पे आ गया था। शोल्डर से जाते जाते वो उनके लेफ्ट आर्म पे पूरा कॉइल करके और उनके फेस से कुछ 3 इंचेस दूर था और उनको ही देख रहा था। अब इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। इन्होंने सोचा कि वो एक स्टोन स्टैचू की तरह अगर पड़े रहे तो वो ही इनके लिए बेस्ट होगा, तो इसके लिए वो बिल्कुल स्टैचू की तरह हो गए। और फिर सोचते हैं कि अगर मेडिसिन लेनी हो स्नेक बाइट के पास तो मेरे घर में तो कोई मेडिसिन भी नहीं है, ही इज़ अ डॉक्टर बट देयर इज़ नो मेडिसिन। उसके बाद वो सोचते हैं कि शायद गॉड ने मुझे पनिश किया बिकॉज आई वॉज सो मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद जैसे वो ये सोचते हैं तुरंत स्नेक अपना हेड टर्न करता है और मिरर में देखने लगता है। इसके बाद डॉक्टर का ये मानना है कि स्नेक अपनी ब्यूटी से इतना ज़्यादा एडमायर हो गया था कि वो उनके हाथ से स्लिप होकर आगे बढ़ता गया मिरर की तरफ अपने खुद के रिफ्लेक्शन को ज़्यादा क्लोजली देखने के लिए। फिर स्नेक जैसे मिरर में देखने लगा, डॉक्टर धीरे से उठते हैं और भाग जाते हैं, कूदते हैं विंडो से यार्ड में और वहाँ से अपने फ्रेंड के घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब ये और इनके फ्रेंड्स आते हैं रूम में सामान लेने तो देखते हैं कि रूम का सफाया हो चुका है, कोई चोर आकर सब कुछ ले जा चुका है एक्सेप्ट हिज डर्टी वेस्ट विच वॉज हैंगिंग जस्ट टू इंसल्ट दिस डॉक्टर दैट यू आर सो डर्टी। दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। थैंक यू।